जो भी सवाल होता है हर एक सवाल अलग होता है, तो डिपेंडिंग ऑन क्या सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सबसे फ्रीक्वेंट सवाल मुझे पूछा जाता है जब कोई नया आता है कि हाउ सून विल आई लूज वेट, हाउ सून विल आई गेट फिट। वो कोई पिल नहीं है, मैजिक पिल जो आप लेते हो, और हर एक बॉडी बहुत ही अलग होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी क्या है, आपका फिटनेस लेवल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और उस पर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा हमेशा से ये है कि मैं लोगों को सिखाती हूँ अपने बॉडी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। और वेट लॉस एक बाय प्रोडक्ट होता है, ऑफकोर्स सबको वेट लूज़ करना है, मगर वेट लूज़ करने से ज़्यादा फिट होना बहुत ज़रूरी है, और फिट होके वेट लूज़ करना सबसे अच्छी बात है। पीरियड्स को लेके बहुत रिलेट होता है कि आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत करो, वो मत करो। तो आपके बचपन में, आप लोगों के बचपन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी मदर ने कहा कि ये मत करो, वो मत करो, अगर आप ये करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है? फॉर एग्जाम्पल अचार को लेके कहा जाता है, दही को लेकर कहा जाता है, आज भी जो लेडीज़ है उन्हें रोका जाता है, बंदिश होती है। तो अभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, क्या कहना चाहोगे जो आजकल के लोग आ रहे हैं, आजकल की बच्चियाँ आ रही हैं? कभी कभी मैं खुद एक्सक्यूज बनाती हूँ कि आई हैव माई पीरियड, मैं जिम नहीं जाऊँगी, एंड माई ट्रेनर्स लाइक नो रबिश, यू शुड गो टू द जिम, यू शुड एक्सरसाइज, बट आई थिंक योर बॉडी विल टेल यू जब आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड यू शुड लिसन टू योर बॉडी, इट गिव्स यू इंस्टिंक्ट्स। तो जब आपकी बॉडी आपको कहती है कि रेस्ट करो, बट समटाइम्स यू गो टू द जिम एंड यू फील मोर एनर्जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मेरी माँ ने या मेरी फैमिली ने या मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि आपको ये अलाउड नहीं है, ये। बट आप कहानियाँ तो आप सुनते हो। Gee, I mean, I don't think we've been raised like that, and that's why we are coming Yeah. here and taking the lead from the front that we need to normalize it because it was normalized in our lives. But हाँ, अभी भी हम देखते हैं कि काला थैला तो अभी भी होता है जब सैनिटरी नैपकिन्स बेचते हैं, वो इतना बड़ा न्यूज़पेपर बांधा जाता है, so I feel like it needs to be normalized, and at the same time, like Soha said, and everybody experiences it differently, कहीं ये नहीं है कि किसी को दर्द हो रही है, किसी को नहीं दर्द हो रही है. It's very important to listen to your body, and And I think अगर, sorry to interrupt you, I don't know when you will stop talking. No, that's fine. अगर आपको किसी से एडवाइस लेना है तो अपने डॉक्टर से लीजिए। आई फील के इंटरनेट से, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से भी आपको बहुत एडवाइस मिलेगी, मगर आपको हेल्थ एडवाइस अगर किसी से चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से लीजिए। अभी मेरा सवाल नेहा मैम आपसे है, Oh, no. तो कहानी जब एक जर्नी की जब कहानी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले, अगर मैंने 2-3 मंथ पहले जो आपने एक पिक्चर अपलोड किए थे रनिंग का, काफी वायरल हुए, काफी कमेंट्स भी आए होंगे। मैंने नहीं अपलोड किए, उन्होंने खुद शूट करके खुद अपलोड कर दिए। हाँ, और अजीब, बहुत ही अजीब कमेंट्स भी आए। अगर आप बोल रहे हैं उन लोगों की ये एक प्रॉपर मैसेज गया होगा जब आप ये लॉन्च हो रहा है, ये सामने आई है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसके रिलेटेड ही था ये कहानी? नहीं, वो मैं ऐसी भाग रही थी तो वो मीडिया वालों ने शूट कर लिया। उसके बाद आई थिंक एज फार एज द मीडिया इज कंसर्न, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू स्पॉट समबडी रनिंग, उनका ठीक है, वो अपने पेज पे डाल रहे हैं, आई एम रनिंग सो आई एम फाइन, आई एम नॉट शाय ऑफ द कैमरा। बट उसके बाद आई हैव आल्सो सीन, वो मुझे क्या, वो हमारे जो ट्रेनर है, हमारे कोच, ही इज इंडिया नंबर 1 इन हिज कैटेगरी एज फार एज hurdles are concerned, he is world number 4 or 5 in his category, such a respected person. उन्होंने उनको भी ट्रोल कर दिया, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, एंड आई नो द वीडियो वेंट वायरल, एंड ऑल्सो लाइक इट वाज अ लॉट अबाउट माई फिजिकल अपीयरेंस। तो किसी को दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे कोई है जो सुबह उठ के फिटनेस पे काम कर रहा है, बट बॉडी में कितने फ्लॉज हैं, किस तरीके के आपकी रनिंग फॉर्म है, आपका कौन सा फेस कैसे ठीक लग रहा है, कौन मोटा लग रहा है, कौन पतला लग रहा है, कौन क्या, थिंग्स दैट डोंट इवन अकर टू यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ रन, एंड देन दे आर पॉइंटेड आउट इन लाइक 2500 कमेंट्स। बट मैंने पढ़े, उसके बाद 15-20 पढ़ने के बाद तो मैं भी थक ही गई थी, बिकॉज आई वाज लाइक ये तो क्या ही हो रहा है। बट द इंटेंशन ऑफ दैट वीडियो, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड, आई स्टिल गेट अप एंड गो फॉर अ रन एवरी डे। अगर मुझे फिर से शूट कर लिया किसी ने रनिंग, नथिंग रॉन्ग विद इट, एंड आई एम फाइन विद इट। काफी लोगों ने भी काफी सेलिब्रिटी के भी ऐसे रन के वीडियो काफी अपलोड्स हुए, बट कहीं ना कहीं एक गुड मैसेज भी जाता है जी, एंड वी आर हियर टू सेंड आउट द राइट मैसेज। यस,
सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने अपकमिंग? हम बस ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, दिस इज़ एन ऑल वुमेन्स रन and girls over the age of 14, please come and run, walk. It's 3 kilometers, it's 5 kilometers, 10 kilometers, it's a marathon. It's not a race. आपकी जो रेस है अपने आप के साथ है. एंड सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप प्रॉमिस यू आप कर सकते हैं. अभी भी 1 महीना है. आई मीन एंड one month is more than enough to come train and do this. Start right now. Please register, please sign up and see the amazing people who are here supporting us, and that's all that matters. And another thing is you can make it a thing with your friends. आपके friends के साथ आप walk कर सकते हो, आपकी गर्लफ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर सकते हो वॉक करते समय. तो यू नो इट्स लाइक अ कम्युनिटी थिंग एंड इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमारी कंट्री में बहुत, जैसे आप लोगों ने बोला, यू नो इट्स नॉट लुक्ड एट विद पॉजिटिविटी. तो ये हम लोग पॉजिटिविटी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए. मैम आप लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव Goflorun जो 8 दिसंबर को हो रहा है. एंड आई वुड इनकरेज ऑल, एज यू सेड, गर्ल्स ओवर द एज ऑफ 14 टू पार्टिसिपेट. और अगर आप रन या वॉक नहीं करते हैं, बहुत ही ज़रूरी है. यू गेट विटामिन डी, इट मेक्स यू हैप्पी, यू इंक्रीज फ्रेंडशिप्स, यू वॉक टुगेदर. एंड आई थिंक मैं तो जिम जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि जिम जाने के बाद काफ़ी टाइम हम सोफे पे बैठे रहते हैं. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दोज 10,000 स्टेप्स इन. तो अगर सब के लिए मेरा ये एडवाइस है कि गेट दोज 10,000 स्टेप्स इन. हाउएवर, और अगर आपको लगता है कि सोहा जीत जाएगी, हम उसको बांध के रखेंगे. आपको चांस और अगर आपको मिलेगा. लगता है कि सोहा जी के 10,000 स्टेप्स रोज नहीं होते, आई प्रॉमिस यू होते हैं. कई बार वो हमारे फ्लोर तक आ जाती है. हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो 9 माले पे और हम 12. और मैं भाग रही हूँ और नीचे. नहीं, वो कई बार बोलती है, घंटी बजा के बोलती है, आई मिस्ड यू. मुझे नहीं लगता वो मुझे मिस कर रही मैं थी. अपने वो बस steps कंप्लीट count कर रही हूँ. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. जो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये सब लोगों के लिए? चैलेंजिंग हम कर नहीं रहे हैं, बिकॉज हम एनकरेज कर रहे हैं कि वुमेन कहीं से तो चालू करो. क्योंकि मेन एम है टू प्रमोट फिटनेस एंड एट द सेम टाइम यू नो इट कैन बी अ स्टार्ट फॉर पीपल हु डू नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ, इन द सेंस व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. Yes. सो स्टार्ट नाउ. Yeah. Thank you guys. Thank you so much. थैंक यू. Thank you. वी हैव अ Medal ceremony. अच्छा. Very quick. थैंक यू. बाय. You going? So we're not doing that? बाय. सी यू. Nice to meet you. One more picture. Nice to meet you. How are you? थैंक यू. So, Reshma is coming from school. I want to get a bit into the personal details and with doctor about. You can start with job. I'll do that. Even saying the word periods or saying the word menstruation is quite taboo in this country. Have you seen cases with people where people have been negligent about their menstrual health and that has led to severe issues? So, which would make a case to why it's important to speak about it rather than hush things up. So it's interesting that the most natural, physiological and wonderful thing in human life was so misunderstood, because of which it was stigmatized. So there's one word that we need to talk about, it's stigma, and what we are doing here today with this. Processing it. We're still processing it. Essentially, you said that it's different for every woman. If you like to add a bit more to that, how menstruation is a different journey for every woman. And different at different times in a woman's life. In their life. So if you would like to add a bit. Correct. So, Shooting, you go on long drives. I've done adventure-based reality shows that go over 3 months, and there's no way that you don't get your period at that time. And then it does get hard. I also feel that that what Doc was saying, that when you actually go into rural areas, I'm not saying that at least we have access to toilets, we have access to better living conditions,
and we can make a difference. And I feel that for us to even experience that, it becomes a story to tell. Whereas that's not the living conditions that women should actually be having or going through. What is our story to tell or a one-time experience is actually their life. And somehow, one way or the other, so whether it's being, associated with NGOs that support or runs like Goflorun, where there is a trickle-down effect to make a change, I feel we should all do it. It starts with, signing up, contributing, having a voice, lending a voice, sharing whatever education you have, normalizing it. Everything is a contributor. So I feel like if anyone can, all of us sitting here can. Like you said, we need to normalize conversations about menstruation. Would you like to use this platform to speak about what your menstruation journey has been like since you were a child till the time you became a mother and host? I mean, it's also stepwise, right? We spoke about it, and I've also been raised by a mom where, it was, or in a home where it was okay to have the conversation between her and me. But there's also my dad and my brother, and it's not like something that we have to sit in the living room and have that conversation. I have been raised in an environment which is a very modern, educated environment where still we were sitting on the side and having this conversation, And now, of course, I have a daughter, I have a son, and I want to make sure that there is education in both of them. Like Doc said, it's about starting education in time for what is appropriate at that point, and especially with my daughter, like totally normalize it, educate her. The scary statistic of like young girls getting their period early, that's another big sign, and we need to address it. So, I mean, my journey or my period journey hasn't been different from maybe Anita's or yours or somebody else sitting over here, but it's definitely been different from women who don't have access or knowledge. How do you manage your low days on days maybe when you're feeling low or when your energy levels are actually low? Because we can't deny it does happen. I don't. How do you manage I'm different. I don't. I'm not like I don't take too many off days. And even my off days, one of my closest friends, Manmeet, is sitting here, who insists we've known each other more than 20 years, and every like fourth day she'll message saying at least take an hour off. So my off days are also my on days. So I'm a different beast. Anita also knows me now. It's sometimes it's hard to keep track, but like I don't know, like I mean I'm the kind of person who normalizes pretty much everything. So yeah, this is definitely life, and nothing stops for me at least. Yeah. Neha is quite blessed like that. I, for one, and I want to ask you this question: are you also always going? Like there are days where I'm also like, I don't want to do anything. Yeah, I mean, on days But- when you just don't want to do anything. But then you feel even worse when you don't. So like, like even Soha was here, she was saying when you finish that walk or finish that run or finish, doing what you set out to do, you just end up feeling better and, everything. And then there are happy hormones. So let's address that. And it's great to partner with someone like her. And great to partner with someone like Anita. Yeah, we're very different. And our common love for running is what has got us together.